गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब लोग? गुड आफ्टरनून गाइस। गुड आफ्टरनून सुरभि, गुड आफ्टरनून जिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा एक बार सबको आ जाने दो, फिर वील टॉक। क्या क्वेश्चन था आपका? सीआरबीआई का। गुड आफ्टरनून आयुषी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, कल हम लेक्चर नहीं ले पाए। आई एम एक्चुअली नॉट कीपिंग वेल। आज भी आई एम नॉट वेरी वेल, बट सिंस आई वाज हियर इन द एकेडमी आई वाज लाइक एक बार लेक्चर ले लेते हैं। सो एक अब फटाक से हम लोग अपने ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तीन क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस कर लेंगे एंड विल बी डन विद आवर लेक्चर। आगे के क्वेश्चंस फिर हम आपको वापस टेलीग्राम में डाल देंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? बोलो। या चल तो शुरू करते हैं। हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वैभव चितलांगा एंड आप सबका स्वागत है मॉड्यूल 2 ऑफ सीएस प्रोफेशनल के आंसर राइटिंग सेशन में। हम लोग अभी पिछले तीन मतलब हम लोगों ने जो लास्ट टाइम अपने तीन क्वेश्चंस लिए थे ऑफ ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स ऑफ मॉड्यूल 2, उसके आंसर्स को भी डिस्कस करने वाले। सबसे पहले वी आर गोना स्टार्ट विद आवर सीआरबीआई वाला सब्जेक्ट, जहां पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया था। The question was Section 2081 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2018 says that where any insolvency resolution, fresh start, liquidation, or bankruptcy process has been initiated, it shall be the function of the insolvency professional to take actions as may be necessary. What are the functions and obligations of insolvency professional? So it's a pretty direct question, जैसा कि आपको हमेशा बोलते रहे क्लास में भी कि आपका सीआरबीआई के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एकदम सीधे वाले क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ज्यादा आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे जनरली कीप फॉर आईबीसी ओपन बुक पेपर। तो ऐसी टाइप के सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे आपको बताना है फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो आओ फटाक से लिख लेते हैं अपने। चलो इसका आंसर लिखते हैं अपने। सो थैंक यू सो मच रौनक एंड कंग्रेचुलेशन। चलो, so the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, the IBC 2016 provides for the creation of an absolutely new profession to carry out the functions and processes under IBC. To carry out the functions and processes under IBC. These professionals are known as insolvency professionals that are a class of regulated but private professionals. सी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के ऊपर क्वेश्चन है, तो उनका डेफिनेशन लिखने का सेंस बनता है ना यहाँ पे। सो दैट आर अ क्लास ऑफ रेगुलेटेड बट प्राइवेट प्रोफेशनल्स having minimum standards of ethical and professional conduct. Next paragraph. Section 208 of IBC
सेक्शन 208 ऑफ आईबीसी, क्या हुआ? मैं क्लास चल रहा है। सेक्शन 208 ऑफ आईबीसी provides for the functions and obligations of these insolvency professionals. Full stop. Their functions are to take actions as may be necessary and required to carry out the following processes. Number 1, insolvency resolution process under part 2. Number 2, insolvency resolution process under part 3. Number 3, insolvency resolution, fresh start process under part 3. नंबर 3 में आएगा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस अंडर पार्ट 3. नंबर 4, लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर पार्ट 2. एंड नंबर 5, बैंक्रप्सी प्रोसेस अंडर पार्ट 3. Next paragraph. While carrying out their functions, the insolvency professionals are required to follow the following code of conduct as well. To follow the following code of conduct. Number 1, take reasonable care and diligence. Take reasonable care and diligence while performing their functions. Number 2, carry out the functions in accordance with the bylaws of their insolvency professional agency. Number 3, to allow the insolvency professional agency agencies to inspect their records. Number 4, to submit a record of all the proceedings. To submit a record of all their proceedings with IBBI and their insolvency professional agency. And last, to carry out the functions as per the terms and conditions as specified. To carry out their functions as per the terms and conditions as may be specified.
डन। तो इतना सा ही क्वेश्चन था, इट वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर लिया। तो सीआरबीआई वाला क्वेश्चन का अपना डिस्कशन यहीं पे होता है खत्म। अब अपने आगे चलते हैं एसएमसीएफ वाले क्वेश्चन में। एसएमसीएफ वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन लिया था? इट वाज समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एंजल इन्वेस्टर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? हम्म। जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था एसएमसीएफ में, दैट वाज दिस: What are the conditions to become an angel investor under SEBI Venture Capital Fund Regulations 1996? ये था, राइट? अगेन अ प्रीटी डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का नहीं है आपको। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है वो बस लिखना था। आइए, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते लिखना। सब रेडी है एसएमसीएफ के लिए? चलो। सेबी वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस 1996। सेबी वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस 1996 provide for different types of funds, provides for different types of funds that pool money from certain investors that pool money from certain investors and invest them in certain specific undertakings, and invest the money in certain specific undertakings. Okay. One such fund is known as the angel fund. One such fund is known as the angel fund, in which certain investors known as the angel investors pool in money and invest in early stage startups. Full stop. Following are the conditions to become an angel investor. Number one, if the investor is an individual, ऐसे लिखना, if the investor is an individual, then he or she must have number A and number B, ऐसे, ठीक है? So if the investor is an individual, then he or she must have number A, net worth of at least 2 crores, net worth of at least 2 crores, excluding the principal place of residence.
and experience as number 1 a serial entrepreneur or number 2 early stage investment or number 3 senior management professional experience of at least 10 years. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आओ 2 if the investor is a body corporate then it must have a net worth of at least 10 crore rupees. If the investor is a body corporate, then it must have a net worth of 10 crore rupees. And last point, the investor could be an AIF, the investor could be an AIF or a VCF. VCF is a venture capital fund. Registered with SEBI under their specific regulations. डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया अपने एंजल इन्वेस्टर्स का। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर लिखा, बहुत ज्यादा तामझाम करना नहीं है। तो ये हो गया अपना सेकंड एसएमसीएफ वाला आंसर। अब आ जाते हैं अपने आईबीसी के अंदर। आईबीसी के अंदर हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन लिया था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। XYZ Limited has undertaking financial debt of 500 crore. It was unable to service the debt to financial creditors. Financial creditors restructured the debt under a restructuring agreement with XYZ Limited. However, it continued to remain in default. Application was filed against XYZ Limited under Section 7 of IBC CIRP to initiate CIRP. To this effect, XYZ took shelter under a Special Provision Act of State of Tamil Nadu. XYZ Limited was declared as a relief undertaking by the government of Tamil Nadu under a state law through which XYZ Limited liabilities were suspended by way of a moratorium. NCLT admitted the application filed by financial creditors initiating CIRP against XYZ Limited. Directors of XYZ Limited immediately filed an appeal before NCLAT against the NCLT's order for admission of company to CIRP, as the company is already subject to moratorium under the Tamil Nadu State Act. Whether the non-obstant clause contained under IBC will prevail over the non-obstant clause contained under the State Act. कोई मेरे को बता सकता है किस केस के बारे में यहाँ बात हो रही है? हम लोगों ने ऐसे ही एक स्टेट पढ़ा था या ऐसे ही एक केस पढ़ा था जिसका हम एक्ट का भी नाम बता दे रहे, महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कैन यू टेल मी विच केस इज दिस अबाउट? ओपन बुक पेपर था, आप इसमें केस बुक खोल के केस खोज सकते थे। कोई मेरे को बता सकता है किस केस के बारे में बात हो रहा है? कोई मेरे को बता सकता है किस केस के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है गाइस? किसी को भी मिला ये वाला केस? इट्स अ वेरी सिंपल केस। आपको मैंने जो 5 केसेस याद करने बोला उसमें ही एक केस है। करेक्ट सुरभि, द केस वाज इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वाला केस, जिसमें महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट और आईबीसी इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था कि विच वन विल प्रिवेल। एंड ऑब्वियसली उस केस में आपको कोर्ट ने बोला था दैट द आईबीसी विल प्रिवेल बीइंग अ सेंट्रल एक्ट। तो यही चीज अपने को यहाँ पे लिखना है। तो चलो लिखो, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 the insolvency and bankruptcy code 2016 is a
is a law enacted by the central government to consider matters related to insolvency and bankruptcy in India. To consider matters related to insolvency and bankruptcy in India. IBC contains, full stop के बाद, IBC contains a non-obstant clause. IBC contains a non-obstant clause which states that the provisions of IBC will prevail over the provisions of IBC will prevail over the provisions of all the other laws. Full stop. This gives IBC an overriding effect over all the other laws in India. Over all the other laws in India. In the instant case, the question is whether the provisions of IBC would prevail over the Special Provisions Act of State of Tamil Nadu. Over the Special Provisions Act of State of Tamil Nadu. The same question was considered by the Supreme Court of India in the matter of Innovative Industries versus ICICI Bank. In the matter of Innovative Industries versus ICICI Bank, where the question was whether IBC would prevail over the Maharashtra Relief Undertaking Act, enacted by the state of Maharashtra. Full stop. In this case, the court held
that IBC being a central law, will prevail over all the other laws enacted by the state. Next paragraph. Applying the principle to the instant case, applying this principle to the instant case, it can be safely said that the provisions of IBC and the non-obstant clause under IBC will override the non-obstant clause and the provisions of the State Act. डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रॉब्लम बता दिया, केस भी बता दिया, अप्लाई करके आंसर भी दे दिया। 5 मार्क्स के लिए इतना आंसर लिखना काफी है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारे तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन भी होता है कंप्लीट। आफ्टर दिस लेक्चर आज रात तक आई विल सेंड यू गाइज वन क्वेश्चन मोर ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग अपने लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलेगा सबको? एनी डाउट्स और क्वेश्चंस गाइज? एनी डाउट्स और क्वेश्चंस? डन। चलिए, तो ऑन दिस नोट गाइस फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं खत्म। आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ यू ऑल। जाइए आराम से पढ़ाई करिए, मस्ती करिए, जम के तैयारी करो। आपको हम और क्वेश्चंस देंगे जिसका आंसर लिख के रखना है, देन वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलता है आप सबसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, बाय।